Welcome back, class. Last class we have done with the magnetic field on an axial line of a bar magnet. Today we are going to do the same for the equatorial line. Equatorial line means a point which is at a equilateral vertex. तो हमने यहाँ पे we have assumed that 3 points is there. एक 2 पॉइंट्स की हेल्प से तो आपका एक बार मैग्नेट क्रिएट किया जाएगा which is having a south pole and north pole. As you see, there is a bar magnet with south pole and north pole, and we have taken another point at point P, which is just equatorial to the line passing through the midpoint of the bar magnet. At this point P, we have to find the magnetic field at point P due to the pole north and pole south. That means at point P, we have to find the magnetic field due to the north pole and south pole of the bar magnet. Suppose B1 and B2 be the magnetic field at point P due to north pole and south pole respectively. So यहाँ पे हमने mention कर दिया है that B1 is a magnetic field at point P due to the north pole, B2 is a magnetic field at point P due to the south pole. Resultant of the magnetic field at point P is B equivalent, which is nothing but B1 plus B2. B1 is one of the magnetic field which is due to the north pole. Since north pole से आपकी magnetic field line exit करती है, तो ये आपको इसका outward आपको डायरेक्शन दिखाया गया है. Whereas in case of south pole आपकी magnetic field line क्या करती है? Enter करती है. So we have taken a inward arrow. So moving to the next. Now the magnetic field B1 अगर हम इसको फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड अगर हम इसका फाइंड करते हैं, ignoring the direction concept, then mu naught by 4 pi dot means dot product is there and the formula क्या था आपका magnetic field strength divided by distance का square. तो magnetic field strength आपका m है and distance is np square. So using trigonometry, simple geometry use करेंगे mathematics, तो mu naught by 4 pi m divided by np square. Using Pythagoras you can find it out. It becomes r square plus l square, and since this is from north pole to south pole, therefore the direction is on LP, like जो आपका PL की जो direction है, that becomes the direction of the B1 vector or simply NP. इसे NP भी कह सकते हैं, PL भी treat कर सकते हैं. It's outward. We're talking about the B2 vector, which is nothing but mu naught by 4 pi dot m divided by SP square. Substituting the value of SP again, mu naught by 4 pi m divided by r square plus l square, or the terms can be fluctuate. आप l square को आगे आगे इसको पीछे ले सकते हैं because it is simply sum, so it doesn't matter. Along PS direction, there is direction P2S. ठीक है, तो वो हमने यहाँ mention कर दिया. In terms of magnitude, if we see that the terms are equal, but in terms of direction they are separate. अगर देखा जाए directions में तो ये अलग अलग हैं, but magnitude wise they are same. So we have taken the magnitude part, therefore B1 magnitude is equal to B2 magnitude. So the resultant of magnetic field, that is B equatorial at point P, is having components of B1 and B2 along Px prime axis and OY axis. दो तरफ के कंपोनेंट बनेंगे. एक तो बनेगा Px axis पे जिसपे B1 और B2 दोनों का ही cos कंपोनेंट आएगा. Whereas when we discuss about the sine component of a magnetic field, then they must be along that line जो आपका vertical आपका axis है, that is YO axis, जिसमें आपको क्या मिलेगा, sine component मिलेंगे. तो just we have taken that angles PSO. Suppose this angle is your theta angle, PSO. ये एंगल आपका क्या है, थीटा एंगल है. So and LP x प्राइम क्या है आपका, एक थीटा एंगल है. बोथ एंगल्स आर थीटा, इक्विटोरियल एंगल है, तो आप सपोज कर सकते हैं. Also the component of B1 sin theta and B2 sin theta are equal in magnitude. If we take the vertical component of B1 along PY and component of B2 along PO, then the equal in magnitude but opposite in direction. So they will cancel out each other. Moving to the next slide.
नाउ बी इक्विटोरियल जो आपका आएगा उसका मैग्नीट्यूड अगर निकाला जाए, देन बी इक्विटोरियल इज नथिंग बट b1 cos थीटा एंड b2 cos थीटा. व्हाई दिस इज? बिकॉज b1 का cos कंपोनेंट और b2 का cos कंपोनेंट जो है दे इज along the px prime axis. So total resultant is along px prime axis. It becomes twice of b1 cos theta because b1 equal to b2, and now we have to find the value of cos theta. तो सिंपल आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे. cos थीटा इज नथिंग बट SO डिवाइड बाय SP. आपने नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल लेके ट्रीट किया, साउथ पोल और P पॉइंट के बीच में अगर निकालेंगे थीटा एंगल के साथ, तो आप cos थीटा SO डिवाइड बाय SP रखेंगे, एंड दैट इज यूजिंग द लास्ट पेज फिगर. And according to that, we have this relation in term of L and R. This is L divided by L square plus R square to the power half. Substituting all the values like b1 की वैल्यू डालेंगे and cos theta की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, then you will got mu naught by 4 pi 2m divided by r square plus l square dot l divided by l square plus r square to the power half. Now m into 2l, that is strength in magnetic strength जो है multiply with twice of the length. 2l is the length of the bar magnet, and this multiplication is called dipole moment. तो यहाँ पे आपने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M सब्स्टिट्यूट कर दिया है. तो मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के टर्म में हम रिलेट कर सकते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई m वेक्टर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर टू द पावर 3/2, एंड नेट डायरेक्शन इज अलोंग px प्राइम बिकॉज b1 इज आल्सो अलोंग दैट एंड b2 का जो कंपोनेंट था दैट इज आल्सो अलोंग px प्राइम. तो टोटल जो डायरेक्शन हो जाएगी दैट इज अलोंग px प्राइम. अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में दिखाते हैं, अगर हम मैग्नीट्यूड दिखा रहे हैं तो वी डू नॉट नीड टू discuss about the direction, but if we are discussing about the vector, then the direction of the magnetic field is opposite to the direction of the magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment किधर से किधर थी? It is from the south to north. आप पीछे वाली फिगर में देखेंगे तो साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होती है, बट मैग्नेटिक फील्ड जो आगे दैट इज फ्रॉम px prime axis, which is opposite to the magnetic dipole moment. Therefore we have taken negative sign here. So it becomes mu naught by 4 pi m vector divided by r square plus l square to the power 3/2. For a short dipole means the length is reduced to very much small as compared to the r. Like distance अगर आप assume करते हैं distance बहुत ज्यादा है as compared to length of the bar magnet. Then B equivalent is nothing but minus mu naught by 4 pi m vector divided by r cube along the px prime. Now switching to the next topic, magnetic field at any arbitrary point due to a short magnetic dipole. अब हमें मैग्नेटिक फील्ड ही निकालना है ड्यू टू एनी पॉइंट. आप एनी पॉइंट किसी भी पॉइंट पे एज्यूम कर सकते हैं. इट डजंट मैटर कि यू आर डिस्कसिंग अबाउट द एक्सियल और इक्वेटोरियल प्लेन, बट कंडीशन इज देयर यू आर यूजिंग ए शॉर्ट मैग्नेट. तो शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल अगर आप यूज कर रहे हैं, इट मींस कि दैट लेंथ इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर. तो आपका जो नीचे वाला रिलेशन था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दैट इज गोइंग टू बी शॉर्ट. अब उसको हम यूज करने के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने एक बार मैग्नेट एज्यूम किया है व्हिच इज शॉर्ट इन लेंथ. सपोज दिस इज ns इज योर बार मैग्नेट, ठीक है, एंड वी हैव टेकन r एट पॉइंट p व्हिच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द डाइपोल. जो आपका बार मैग्नेट है, आपका जो डाइपोल की एक्सिस है उसके साथ जो पॉइंट p है वो थीटा एंगल पे इंक्लाइन है. Now what we have to do, we have to find the value of magnetic field at point P. हमें मैग्नेटिक फील्ड के एट पॉइंट P पे क्या करनी है, वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है मैग्नेटिक फील्ड को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रोटेटेड दिस मैग्नेट बार मैग्नेट in a such a way that it is moving along S1 N1 axis. अब Sn को इस तरह से टिल्ट कर गए कि it becomes S1 and N1. If it is this, so the point P is along the axial axis. अगर मैं डाइपोल को ऐसे मूव कर देता हूँ that Sn जो था that become S1 and N1, so it is an axial line. and axial line के अकॉर्डिंग आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है, you know well. पीछे आपने रिलेशन निकाली शॉर्ट डाइपोल मूवमेंट की, लास्ट क्लास में हमने निकाली थी मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ शॉर्ट डाइपोल ऑन अ एक्सियल एक्सियल लाइन. नेक्स्ट में आपने क्या किया, यू हैव रोटेटेड दिस मैग्नेटिक dipole or simply a bar magnet in such a way
that it is along the S2 and 2 axis. Now the point P is on the equatorial line. तो फर्स्ट केस में आपका ये एक्सियल लाइन बन गया, सेकंड केस में आपका इक्वेटोरियल लाइन बन गया. नाउ वी हैव B1 एंड B2. आपके पास B1 भी मिल जाएगा एंड B2 भी मिल जाएगा. देन यू हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर. B1 एंड B2 का रिजल्टेंट निकालेंगे विच इज अलोंग PM एक्सिस, जो अलोंग द लाइन PM आपको मिलेगा. सो लेट P be any point at a distance r from the center of the bar magnet PON having an angle theta. The dipole moment capital M. Suppose कि आपने डायपोल लिया है नॉर्थ एंड साउथ पोल के हेल्प से एंड हैविंग ए शॉर्ट लाइन, तो उसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो कुछ होना चाहिए, दैट इज टू बी कैपिटल M. It can be resolved into two components. One is cos theta, another is sin theta. One is along OP, another is along direction perpendicular to OP. ठीक है, आगे चलते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. द मैग्नेटिक डायपोल NS of the dipole moment can be considered one dipole, north and south pole, having a dipole moment m cos theta and another as m sin theta. हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे मैग्नेटिक डायपोल को यूज कर रहे हैं डायरेक्टली, बिकॉज आपको रिलेशन पता है. मैग्नेटिक डायपोल इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द मैग्नेट. बार मैग्नेट जो आप यूज कर रहे हो उसकी लेंथ को 12 को अगर मैं स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिलता है. तो इन द प्रीवियस फिगर अगर हमारे पास ये एक मैग्नेट था, बार मैग्नेट था, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये दो कंपोनेंट बन सकते हैं. वन इज अलोंग दैट एक्सिस ऑफ दैट OP एक्सिस के अलोंग बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग बन जाएगा. तो आपके पास क्या है, यहाँ पे दो कंपोनेंट आपने यूज किया मैग्नेटिक डायपोल के लिए. फर्स्ट कंपोनेंट यूज किया है N1 S1 के अलोंग, जो कि आपका cos थीटा कंपोनेंट है, और सेकंड आप यूज कर रहे हैं N2 S2 के अलोंग, व्हिच इज नथिंग बट साइन कंपोनेंट. तो एट पॉइंट P आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B1 के लिए और B2 का अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालें, इनको सम अप करें, यू गॉट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे हम वेक्टर यूज कर रहे हैं. सो B इज नथिंग बट B, क्योंकि यहाँ पे आपका पैरेललोग्राम लॉ जो आप यूज करते थे, आप कह सकते हैं ट्रायंगुलर, जो ट्रायंगल का लॉ है वेक्टर का, वो यूज कर सकते थे. तो वो हम यहाँ पे यूज कर गए. B1 वेक्टर यू नो, B2 वेक्टर यू नो, सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सॉल्व फॉर दैट, एंड वी आल्सो फाइंड द डायरेक्शन. तो व्हाट इज देयर, it becomes mu naught by 4 pi m divided by r cube. R cube क्यों आया, because you are taking a short dipole, therefore L is taking to be negligible as compared to R, and the square term is also there. And अब क्या बचा आपके पास टर्म, एक तो टर्म बची है B1 के साथ cos थीटा के कंपोनेंट, क्योंकि आप चूज कर रहे हैं एक्सियल लाइन, तो एक्सियल लाइन के अकॉर्डिंग ट्वाइस का फैक्टर आ जाता है, वो आपने यहाँ पे यूज किया. 2 cos थीटा वहां बनता है, एंड उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा. सेकंड केस आपका बनता है कौन सा, B2 का केस हो जाएगा इक्वेटोरियल लाइन का. इक्वेटोरियल लाइन में आपके पास कंपोनेंट जो है वो sin थीटा कंपोनेंट आपको दिख रहा है, बिकॉज वी हैव टेकन m sin थीटा. ठीक है, यहाँ पे कोई स्क्वायर का मतलब कोई नंबर नहीं होता कि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या हो गया, इट बिकम्स sin स्क्वायर थीटा. एक सिंपल सा रिजल्ट आप एक्सियल से लेंगे और इक्वेटोरियल से लेंगे और दोनों को यहाँ पे प्लेस कर देंगे, एंड देन यू गॉट दिस रिलेशन. सो म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई m बाय r क्यूब को हमने बाहर निकाल लिया, तो स्क्वायर टर्म अपने आप रिमूव हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, एंड व्हाट लेफ्ट इन द स्क्वायर ब्रैकेट, इट इज 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, व्हिच इज सिंपली लाइक उसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो इट बिकम्स 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस one term is left, that is cos square plus sin square, that's supposed to be 1. So I have taken this is there, like under root 3 cos square theta plus 1. ये आपका क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा. नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालनी है एट एनी पॉइंट, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं फॉर ए शॉर्ट डाइपोल. फॉर ए शॉर्ट डाइपोल म्यू नॉट बाय 4 पाई m डिवाइड बाय r क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos square theta plus 1. अब अगर आपको फाइंड आउट करनी है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, देन यू हैव टू फाइंड tan अल्फा, एंड अल्फा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूजिंग द प्रीवियस फिगर जो आपके पहले वाले पेज पे फिगर थी, और इससे पहले वाले स्लाइड पे जो आपकी फिगर थी पेज नंबर 2 पे, दैट इज mk एंड pk आप वहां से निकालेंगे, दैट इज नथिंग बट b2 एंड b1, एंड फाइंड इट आउट दिस रेशियो
सब्स्टिट्यूट करेंगे इनकी वैल्यूज को। B2 जो था वो इक्विटोरियल लाइन के लिए निकाली थी गई थी मैग्नेटिक फील्ड, एंड B1 जो था इक्विटोरियल एक्सियल लाइन के लिए निकाली गई थी। उनका रेशियोज निकालेंगे, यू गॉट द वैल्यू हाफ ऑफ tan थीटा। इसके कुछ स्पेशल केस दिए गए हैं। व्हेन द पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सियल एक्सिस, अब विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल मैग्नेट अगर मैं एज्यूम करूं मेरा थीटा क्या है, 0 है, दैट मींस पॉइंट P जो है वो x एक्सिस के अलोंग है, एक्सियल एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। देन cos 0 इज नथिंग बट 1, एंड आई हैव सब्स्टिट्यूट देयर cos 0 की वैल्यू यहां डाल दिया हमने, तो cos 0 की वैल्यू 1 डाल दी, क्या बन जाएगा, इट बिकम्स 3 + 1, सो इट बिकम्स 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज 2। तो ये आपका रिलेशन क्या आ गया, b = μ0/4 pi m / rq × 2। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड था किसके लिए, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल एट फॉर एन एक्सियल केस, जो कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था एक्सियल लाइन के लिए, जहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी फॉर ए शॉर्ट डाइपोल। द सेम रिजल्ट इज देयर। एंड आज की क्लास में जो हमने इसके बाद पढ़ा इक्वेटोरियल लाइन के लिए फॉर द शॉर्ट डाइपोल, हमारे पास रिजल्ट ये आया था μ0/4 pi m / r3। तो अगर हम किसी भी पर्टिकुलर एंगल के लिए निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये रिलेशन याद करना पड़ेगा, दैट इज b = μ0/4 pi m / r3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा + 1। शॉर्ट डाइपोल दिया है तो हम ये रिजल्ट डायरेक्ट लगा सकते हैं। If it is 1 marks or 2 marks question, for 1 marks you generally use this relation directly कि b की रिलेशन जो होती है आर्बिट्ररी के लिए क्या होती है, एंड देन उसके बाद पर्टिकुलर एंगल सब्स्टिट्यूट करो एंड फाइंड इट आउट। बट अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो आपको थोड़ा सा डेरिवेशन पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब की बार बार मैग्नेट पे हम टॉर्क आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, सो दैट कि इसके लिए हमने क्या किया, वी हैव प्लेस्ड दैट बार मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। So that red line shows the uniform magnetic field, and we have placed this bar magnet here. And if this bar magnet is placed in such a way that it makes an angle theta with respect to the direction of the magnetic field, then the two forces acting at the two different poles. एक आपका पोल नॉर्थ पोल है जिसपे एक फोर्स लगेगी विच इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है डाइपोल जो मूवमेंट आपका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू एफ। क्यों निकाला ऐसा, अगर आपको ध्यान है तो हमारे पास बी की रिलेशन जो आई थी दैट इज नथिंग बट μ0/4 pi इनटू दैट m डिवाइड बाय रिलेशन थी आर स्क्वायर रिलेशन थी हमारे पास। अगर उस सिंगल m के अंदर एक नेक्स्ट m से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, दैट बिकम्स μ0/4 pi m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, एंड दिस इज द फोर्स। ये आपका चैप्टर का जब हमने स्टार्टिंग किया था, इस चैप्टर का स्टार्टिंग किया था, वहां पे फोर्स की एक रिलेशन बनाई थी जिसको हमने कूलम्स लॉ से जनरेट किया था। कूलम्स लॉ में जस्ट लाइक चार्ज पार्टिकल होते हैं q1 q2, तो हमने रिलेशन निकाली थी F is proportional to q1 into q2। वहां पे इक्विटोरियल मतलब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते थे, बट व्हेन वी आर स्टडीइंग अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड तो भी कूलम फोर्स आपने निकाली थी विच इज प्रोपोर्शनल टू m1 into m2। तो वही हम यहाँ पे यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फोर्स इज नथिंग बट m टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ पोल है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग लग जाएगा फोर्स mb करके। फोर्स अगर हम साउथ पोल पे निकालेंगे दिस इज इक्वल इन अमाउंट बट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। Hence the two force constitute a couple, simply a torque, and tends to rotate in a clockwise rotation। क्योंकि यहाँ पे आपकी दो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं दैट फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नेट बट अपोजिट डायरेक्शन, so they will start rotating to the dipole। अगर वो अपने बाय मैग्नेट को या डाइपोल को मूव करना स्टार्ट करती है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो सपोज किया कि ये एक स्मॉल एंगल रोटेट करती है, तो उतना स्मॉल एंगल रोटेट करने में आप क्या कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर करेंगे, तो वो भी हम बाद में निकालेंगे। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द टॉर्क एंड देन मूव टू द पोटेंशियल वाले पार्ट। तो टॉर्क क्या होता है, दिस इज नथिंग बट द फोर्स ऑन द आइदर पोल मल्टीप्लाई द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। सो द फोर्स इज नथिंग बट m टाइम्स ऑफ b। m is magnetic field strength and b is the magnetic field dipole strength। m is dipole strength and b is magnetic field।
एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट के एन। आप वहां पे देखेंगे तो हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है एंड के एन की वैल्यू आइडेंटिफाई की है विच इज नथिंग बट एन एस मींस डाइपोल लेंथ इनटू sin थीटा दैट इज 2l sin थीटा। सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने m भी 2l sin थीटा and 2l into m becomes capital M into b sin थीटा। तो अगर हमें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे देन torque which is tau vector is equal to m vector cross b vector means torque जो है it's a cross product of magnetic dipole moment and magnetic field strength. This is a cross product m और b का क्रॉस प्रोडक्ट है टाउ। तो इसकी हेल्प से इफ वी नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डाइपोल मोमेंट देन टाउ रिप्रेजेंट द थर्ड डायरेक्शन। If magnetic dipole moment and the direction of the magnetic field is perpendicular to each other, then the direction of the torque is given by the right hand rule. Right hand Fleming का right hand rule था, हम वो use कर सकते हैं. We can give the direction of the torque. Now, if magnetic field is supposed to be unity and theta is supposed to be 90 degree. If we take B as 1 and theta, that is angle between the magnetic field and the magnetic dipole moment is to be 90 degree, then sin 90 is supposed to be is equal to 1, then tau equal to magnetic dipole moment. Tau को magnetic dipole moment के equal हमने proof किया. So the magnetic dipole moment of a magnetic dipole is numerically equal to the torque acting on a dipole when placed perpendicular to the magnetic field of unit strength. It's a simple way to describe the टॉर्क डेफिनेशन। अगर हमें टॉर्क की वैल्यू को निकालना है या टॉर्क की वैल्यू को डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? टेक बी एस 1 एंड द डायरेक्शन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट is taken to be 90 degree, that is perpendicular case, and we can easily define the torque. Now you to find the unit of the magnetic dipole strength की अगर यूनिट निकालनी है that is nothing but tau divided by b sin theta. sin theta एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यूनिटलेस है. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टाउ which is nothing but न्यूटन into मीटर, फोर्स into आपने पढ़ा था फोर्स into perpendicular distance. So this is by units Newton into meter and B is in term of Tesla. So joule per Tesla is one of the unit of the magnetic dipole moment. And इसके अलावा आपने M की वैल्यू और भी निकाली that is magnetic field strength into that 2L. तो वहां से भी आप उसको यूज कर सकते हैं. Now moving to the next page. Moving to the next topic, that is potential energy of a bar magnet placed in a magnetic field. Now we have to find potential energy. तो अगर हम किसी डाइपोल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में स्मॉल एंगल को टिल्ट कर देते हैं, लाइक हमने बार मैग्नेट को एक थीटा या डी थीटा एंगल के लिए क्या किया? मूव किया. तो हम जो बार मैग्नेट पे मूवमेंट कर रहे हैं थीटा एंगल के लिए, दैट इज यूज्ड एज टू स्टोर द पोटेंशियल एनर्जी. लेट्स क्या एक बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m be placed in a uniform magnetic field B and theta B is the angle which the bar magnet make with the direction of the magnetic field. Therefore torque is given by mb sin theta. ये तो हमने प्रूफ कर दिया है. Now let the magnet is rotated through an infinitesimally small angle d theta under the action of constant torque and it is stored as a potential energy which is nothing but a kind of work done. Moving to the next page. So small amount of work done is equal to potential energy and this is small amount of work done is equal to tau d theta which is mb sin theta d theta. कैसे निकाला? टाउ की रिलेशन हमको पता थी mb sin theta because m into m cross b होता है, तो आपने उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया and take d theta as a infinite small angle for which we are just displacing that dipole, magnetic dipole or simply a bar magnet. Now initially आपने assume किया that bar magnet is at angle theta 1 and finally it is theta 2. So d theta को dw को इंटीग्रेट करेंगे हम to calculate the total work done in moving from theta 1 to theta 2. तो आपका राइट हैंड जो है वो भी आपका डिफरेंट इंटीग्रेट हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2 के लिए टाउ डी थीटा एंड टाउ डी थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की mb sin थीटा डी थीटा एंड थीटा 1 से थीटा 2 के लिए क्या किया? उसको इंटीग्रेट कर दिया. m कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, टेकन इज आउटसाइड
इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज नथिंग बट माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा लिया एंड देन सब्स्टिट्यूट द अपर एंड लोअर लिमिट, इट बिकम्स एम बी माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1। तो वहां से एक नेगेटिव साइन आएगा जिसको हमने आउटसाइड मतलब ट्रीट कर लिया, एंड दिस बिकम एक्चुअली थीटा 1 माइनस थीटा 2। कॉस थीटा तो पॉजिटिव टर्म आएगा थीटा 1 के लिए, और थीटा 2 के लिए नेगेटिव टर्म आएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, सपोज दैट बार मैग्नेट इज इनिशियली परपेंडिकुलर। सपोज किया सबसे पहले जो बार मैग्नेट था, दिस इज बी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। आपने जो बार मैग्नेट प्लेस किया है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच का जो एंगल है दैट इज परपेंडिकुलर एंगल। इन दैट केस थीटा इज टेकन टू बी 90 डिग्री। इनिशियली थीटा आपका 90 डिग्री, आप उससे उसको थोड़े देर के लिए रोटेट कर रहे हैं, तो थीटा 1 इज टेकन एज 90 डिग्री, so cos 90 is equal to 0, and another angle is you have moved from 90 degree to theta angle, so that theta 2 is nothing but theta, so W is equal to minus mb cos theta, which is nothing but equal to potential energy, so we can take potential energy is equal to minus of m dot b, क्योंकि एम बी कॉस थीटा क्या है, डॉट डॉट प्रोडक्ट है, तो हमने इसको एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया विद नेगेटिव साइन, which again specify the potential energy is a restoring type of energy है। स्पेशल केस अगर इसका देखा जाए तो cos थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो पॉसिबल केसेस आपके ये है when थीटा इज 0, फाइनल थीटा आपका 0 होगा, then cos 0 is again a 1, and u is equal to minus of mb, that is minimum value of the magnetic potential energy। अगर आपने थीटा को 90 एज्यूम किया है, देन cos 90 is 0 and the potential energy comes to be 0। If theta is equal to 180, the cos 180 is equal to minus 1 and u is equal to mb, which is the maximum value। Coming to the next page, now we are comparing a solenoid with a bar magnet। हमने सोलेनॉइड को एज ए बार मैग्नेट ट्रीट किया है। जब लास्ट टाइम हमने डेरिवेशन की थी तो वी हैव टेकन अ करंट मूविंग थ्रू अ सोलेनॉइड एंड ट्रीटिंग इट एज ए बार मैग्नेट। अब उसको बार मैग्नेट ट्रीट किया गया, तो डाइपोल को भी हम कंसेप्ट को एक बार स्टडी करके देखते हैं कि यार ये सही है या गलत है। तो वी हैव टेकन अ सोलेनॉइड हैविंग करंट आई एंड नंबर ऑफ टर्न्स आपने n एज्यूम कर लिए विद द टोटल लेंथ l। अगर मैं सिंगल लूप की बात करूं तो सिंगल लूप कैरिंग अ करंट इज बिहेविंग जस्ट लाइक अ मैग्नेट विद नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आपने स्टार्टिंग चैप्टर में पढ़ा है कि किसी एक सर्कुलर लूप से करंट अगर पास होता है तो इसका एक फेस जो है वो नॉर्थ एक्ट करता है, दूसरा फेस वो साउथ एक्ट करता है। तो यहाँ पे आप थंब रूल भी लगा सकते हैं, यू कैन आइडेंटिफाई विच वन इज साउथ पोल विच वन इज नॉर्थ पोल। तो आपका जो फ्रंट फेस है जहाँ से करंट इन एंट्री कर रहा है दैट बिहेविंग एज ए साउथ पोल, एंड जहाँ से वो एग्जिट करेगा दैट बिहेविंग एज ए नॉर्थ पोल। तो वी हैव टेकन सिंगल लूप एज ए डाइपोल। हमने सिंगल लूप को एक स्मॉल बार मैग्नेट एज्यूम कर लिया है, विच इज नॉर्थ पोल साउथ पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल। इस तरह से इसने हर एक लूप के लिए एक बार मैग्नेट को यहाँ पे प्लेस किया है। अब हम बात करें तो हमारे अगर कॉर्नर वाले डाइपोल पोल को छोड़ दिया जाएगा, साउथ पोल को और नॉर्थ पोल को थोड़ी देर के लिए हम लीव करें, तो अंदर जितने भी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, बिकॉज नॉर्थ एंड साउथ पोल एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो उनका तो कोई रोल बचा ही नहीं। बचा किसका, जो आपके बाउंड्री पे पोल है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो द नेट कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस टोटल नंबर ऑफ डाइपोल, जितने भी डाइपोल से आप क्रिएट कर गए हैं, इनका टोटल सम अप निकाला जाएगा, then it is just behaving just like a bar magnet with north and south pole at the extreme point. So here consider a long solenoid of length L and area of cross section as A and carrying current I. Then each behave as a small magnetic dipole of the value of I into A. ये आपने निकाल चुका है, P is equal to I A। ठीक है, आपने जैसे गॉस थ्योरम निकाला था वैसे आपने यूज किया था एम्पियर सर्किटल लॉ, और वहां से आपकी वैल्यू आई थी P is equal to IA। The equivalent magnetic field of the solenoid having n number of turn is nothing but NIA. That is also you have done. So it is behaving just like a bar magnet। ठीक है, ड्यू टू ईच इंडिविजुअली करंट लूप के लिए अगर निकालते हैं उसको समअप करते हैं तो भी सेम रिजल्ट आता है। नाउ क्योंकि कभी भी डाइपोल आपका जो होता है, लाइक कोई भी बार मैग्नेट जो होता है उसको सिंगल पोल तो होता नहीं है, तो इफ यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक अ
magnetic compass near to the that one of it. Suppose हमने क्या किया, ये एक बार मैग्नेट लिया and we have identified that north pole is there and we take a magnetic compass and place nearby to this and multiple time हमने उसको अलग अलग प्लेस पोजीशन पे रख के देखा and उसकी डायरेक्शन के बेसिस पे हमने एक आउटलाइन बनाई. that particular outline shows by this line. नॉर्थ पोल से एग्जिट कर रही है एंड साउथ पोल पे जाकर के एंटर कर रही है. ठीक है, तो अब यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न आपका बना, दिस इज दैट यूजिंग ऑफ द मैग्नेटिक कंपास आप कर सकते हैं. और 10th का ये एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फील्ड लाइन कैसे बनती है. सो यू कैन सी दैट फ्रॉम दैट की नॉर्थ पोल से एग्जिट होगी, साउथ पोल पे एंटर करेगी एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके क्लोज कर्व बनाती हैं, कंटिन्यूअस होता है. अब इसके बेसिस पे इसी चीज को आपने इसको कंपेयर किया किससे, सोलेनॉइड केस से. तो इन बोथ द केसेस you can justify why the solenoid behave as a magnet. Now the last topic for today is magnetic field lines, which is does not in reality. Magnetic field line जो है वो like magnetic field line, magnetic field अपने आप में बात किया जाए तो एक इमेजिनरी लाइन होती है. So it does not exist in reality, but they are virtually they are present. The magnetic field line is a path along which an isolated north pole will tends to move. एक सिंपल आप बार मैग्नेट लीजिए और उसको फ्रीली सस्पेंड कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट हो जाता है एंड साउथ पोल जोग्राफिकल साउथ की तरफ डायरेक्ट हो जाता है. दिस इज बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रॉपर्टी, जो कि यहाँ पे हम स्टडी करेंगे. First point is there, these lines are closed continuous loop. You can see it's a closed and continuous loop. Next point is there, outside the body of the magnet, the magnetic field lines from north to south. Inside, the magnetic field is from south to north pole, but outside it is from north pole to south pole. Third point, tangent to the magnetic field line at any point give the direction of the magnetic field. If we take tangent to the magnetic field line, it gives the direction of the magnetic field at that particular point. Fourth point, no two magnetic field line can intersect each other. दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या कट नहीं करेंगी. दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी सेज दैट कि डाइपोल जो होते हैं दैट इज मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट. मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता. इफ इट इज हैपन, तो मोनोपोल के केस में क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन जब पास होंगी तो दे मस्ट क्रॉस ईच अदर एट वन ऑफ द पॉइंट, एंड इफ इट इज हैपन देन एट दैट पर्टिकुलर टाइम मैग्नेटिक कंपास विल फ्लक्चुएट, व्हिच इज नॉट पॉसिबल. So no two magnetic field line can intersect each other. That is, monopole does not exist. And the point 5 is the magnetic field line dilate laterally and contract longitudinally. अगर longitudinal हम चीजों को देखना स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को लेंथ वाइज देखेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. ठीक है, बट अगर हम उसको लेटरली देखते हैं तो ये क्या होती है, डायलेट होती है. So these are the 5 magnetic properties of the magnetic field line. Today we are going to stop it here. In the next class, we have discussed with the earth magnetism case and उससे related कुछ magnetic element हम study करेंगे. So today I am going to stop it here.